to discuss why social emotional skills are important to develop an inclusive atmosphere, inclusive classroom. But before we go into the topic, before we actually talk about what these social emotional skills are and why is it important for a head of the institution to learn these emotional skills. So this is actually the fundamental topic of discussion, why social emotional skills are important for developing an inclusive classroom. And before we go, as I said, we want to fundamentally look at some of the premises, as I have already identified, tried to convey to you कि जब भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जब भी एक एक्सपर्ट आपके सामने आता है, अगर ये पर्सपेक्टिव है कि आपको कुछ पता नहीं है, आपके पास जो पर्सपेक्टिव्स है वो कुछ नहीं है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो कुछ नहीं है, then it is a foundational error with the whole scheme of workshop and training. But as I said, I do not consider myself as an expert. As I said also that whenever I come to this place, it has always been enriching, counter-enriching for me in a sense. Like I have always learned much more than I may have taught or I may have made you to learn. So that's why, as Khan Saab said, that you already have capacities, you have experience. For example, if you sum up, we are 20 people in this room, you at least have more than 20 years of experience. So 20 into 20, how many years of experience? 400 years of experience present at this point of time, in this classroom, in this training hall. So can we utilize that experience? 4 centuries, isn't it? So we have an experience of 4 centuries present at 11:30 in this hall. So as an expert, I can only call myself expert if I can utilize that experience of 400 years in developing one, my presentation, another, the learning atmosphere, and creating that space where we can engage with each other in a more productive and enriching manner. असल में यही मकसद है ट्रेनिंग वर्कशॉप्स का. तो अगर हम सिर्फ फॉरेन मॉडल्स या वेस्टर्न मॉडल्स या यूरोपियन मॉडल्स को अनक्रिटिकली अपने अंदर रखते हैं कि दिस इज़ बेस्ट, वी ऑलवेज लुक एट foreign and western or European models कि this is I think best. Maybe yes, they are working in their environments, in their context, in much more rigorous manner. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनका मॉडल हमारे लिए बेस्ट है. लेकिन unfortunately this has been the trend among our policy makers. But yes, still change is happening. The institutions like this, आप देखिए स्कूल एकेडमी लीडरशिप पे बात होती है, तो this is I think the beginning of a very important process. In fact, it's a process. It cannot actually, one workshop is not sufficient. As Dr. Fayaz was telling and other organizers were, that there are different modules being developed which actually can enhance your capacities. You already have those capacities. It is only that you can build on. So, as I said, we cannot uncritically embrace these models which are not related to our context. लेकिन unfortunately, this is the trend. और जब हम इन मॉड्यूल्स को अनक्रिटिकली गले लगाते हैं, हम चाहते हैं कि अब हम इनको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करें. व्हाट आर वी एक्चुअली डूइंग? असल में हम क्या कर रहे हैं? वी आर अंडरमाइनिंग आवर ओन इंडिजीनियस एंड नेटिव पर्सपेक्टिव्स. जो हमारा, जैसे मैंने कहा, 400 साल का एक्सपीरियंस अभी इस हॉल में है. हम किसी दूसरे मॉड्यूल को लाते हैं और इसको पूरा साइड में कर देते हैं दरवाजे के बाहर, as if you have no worth, as if you do not have any perspective, as if you have not been working in your schools, in your contexts, local contexts, with all the limitations. Look at the situation we have been going through for last 40 years, 50 years. लेकिन उस माहौल में भी you have come up at resilient. ठीक है? So the point is, we undermine our local systems of knowledge and we do not give value to the contextual experience जिसकी मैं बात कर रहा था. When we sum up जो आपका experience है वो कहाँ है, फिर उसको हम कैसे इन workshops में कैश करेंगे. So that is actually the point. I wanted to start this presentation with this platform, that no, experts are not powerful. You are powerful because you have 400 years of experience. I have, for example, maybe just 5 years of experience in teaching. So is this powerful or that powerful? So it means you are powerful. You have capacities already. The only thing is some
ignition is required, maybe some capacity building is required. That is true, but without undermining the contextual experiences. Models are important, foreign models are also important, बट जो आपके लोकल सिस्टम्स ऑफ नॉलेज है, इंडिजीनियस पर्सपेक्टिव से, आपका अपना एक्सपीरियंस है, आपकी खुद की रेजिलियंस है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. सो दैट इज़ वाई हम थोड़ा लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे. इसको शायद आप नहीं जानते होंगे, पिक्चर से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते होंगे. तो ये एक गुजरे हैं बहुत बड़े, लेकिन पहले बड़े नहीं थे. ओबियसली सब पहले छोटे ही होते हैं, लेकिन उससे सब तो छोटे ही होते हैं. लेकिन आप देखिए, कुछ लोग ज़्यादा गरीब भी होते हैं, कुछ लोगों के पास स्कूल जाने के लिए चप्पल भी नहीं होती, या बैग नहीं होता, यूनिफॉर्म नहीं होता. ये भी उनमें से एक बच्चे थे. इनके पास, ही वॉज अ स्लम बॉय, वेरी पोअर, रघुनाथ आनंद मशेलकर. इसके पास फी नहीं था, ही वॉक्ड बेयरफुट, कुछ नहीं था. एंड घर में ऐसी सोच भी नहीं थी कि, और सोच तो या साधन भी नहीं था. साधन के बाद सोच भी आ सकती है, लेकिन उनके पास, द पॉइंट इज, लेकिन डू यू नो, ही एंडेड अप एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR. दिस इज द अचीवमेंट. ही इज ऑल्सो अ फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन. And look at the achievements, Indian awards, the Padma Shri, Padma Bhushan, many, I mean, look at across globe, across Europe, across US. But how is it possible? How was Mashelkar able to do it? Do you know why? Because in his childhood, he got a good teacher. Not that he taught him. No, he understood the context of this boy. He understood that there is some spark in this boy, और ये आगे बहुत जाएगा. हो सकता है उस टीचर को ये पता ना हो, कि उसको लगता होगा शायद ये कल टीचर बन सकता है या ऑफिसर बन सकता है, लेकिन ये कभी इमेजिन नहीं किया होगा उसने. दैट टीचर सपोर्टेड दिस बॉय एंड मशेलकर बिकेम दिस. सो दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम सोशल इमोशनल स्किल्स की बात करते हैं, जब हम इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करते हैं, ये असल में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लीडर का या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो. सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट दैट पर्टिकुलर टीचर, बल्कि ये एक कंटिन्यूम में है. आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से स्टार्ट कीजिए और टीचर को जहन में रखिए. सो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फैक्टर्स. और ये फिर मशेलकर बन गए. देखिए, ये ओके, एक और इंसान है, अभी ऑथर है, हरीरी. ये एक जीव है, इसराइल के राइटर हैं, फिलोसोफर है, थिंकर है. जनरली जब भी हम इसराइल का नाम सुनते हैं थोड़ा डर जाते हैं, खासकर हमारी कम्युनिटी में. लेकिन ऐसा नहीं है. ही इज़ अ थिंकर, ही इज़ अ राइटर. उन्होंने कुछ बुक्स लिखी है, हरीरी, यस, वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल बुक्स. और सबसे इम्पोर्टेंट, यस, एग्जैक्टली, इनके पॉडकास्ट आते हैं. सो सैपियंस इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड. आप टाइटल की तरफ देखिए. और यहाँ से एक और बुक है इनकी, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो. चलिए, ये तो समझ आता है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, लेकिन ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो जो अभी आया नहीं है. लुक एट द इंटरेस्टिंग टाइटल ऑफ द बुक, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो. आपके लिए सिर्फ थोड़ा कि ये इंसान हमें बताते हैं कि, यस, अगर आप पिक्चर लेना चाहते हैं, आई कैन शेयर द प्रेजेंटेशन लेटर ऑन, ठीक है, ताकि आप थोड़ा फॉलो करें. सो ये हमें कहते हैं, हरीरी हमें कहते हैं कि 4 स्किल्स, 4 C's आर वेरी क्रूशल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, स्पेशली इन द करंट ग्लोबल ऑर्डर. चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप ऑफिसर हैं, चाहे आप ऑर्गेनाइजर हैं, या किसी भी लेवल पे. विच इज़ 1, क्रिटिकल थिंकिंग, communication, collaboration and creativity. Whether you are a student, you are a teacher, you are maybe the principal secretary, the director, the joint director, CEO, ZDO, principal, headmaster, or a teacher, you
must have these four skills of critical thinking, creating that space of critical thinking within your sphere of influence. For example, you also have bosses, you have subordinates, isn't it? So, do your bosses give you that critical space where you can critically think? Or do you give your subordinates that space where they can critically think and give opinions? Or does a teacher give that critical space to a student to express his or her opinion? So this is actually very important. Critical thinking, communication. Do you have easy communication channels? Is a teacher free to talk to his or her immediate boss, immediate officer? So are there these communication skills? So similarly, collaboration. Do we collaborate with the student? Do we create that space, empowering space in a school, in your institution, where all your stakeholders, including students, teachers, even non-teaching staff, we must not separate them away. No, collaboration is important. So ultimately, creativity. So, until and unless you have critical thinking, you have free communications channels, and you have collaboration, it will lead to creativity. And these four skills are very crucial, as he is saying, that for next generation jobs, for next generation people to survive, for their existence, this is something very crucial and very important. But what is that we do? जनरली हमारे स्कूल्स का माहौल क्या होता है, जनरली हमारे फैमिलीज में क्या होता है? मार्गरेट मीड एक फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट है. शी सेज दैट चिल्ड्रन मस्ट बी टॉट हाउ टू थिंक, नॉट व्हाट टू थिंक. But generally, as a teacher, as a parent, as a mother, we force them that this is what you have to think. We limit their choices in the initial go. And as a teacher, we do the same thing. As a head of an institution, we do the same thing. That this is the choice. Even sometimes choiceless choice, optionless options, we put in front of our subordinates or in front of our students. That look, this is number 1 to 3, this is the space wherein you can think or you have the freedom. But unfortunately, that is why our curriculums, our models are not relevant to the context, because we limit the choices of our students. We force them what to think, but we don't teach them how to think. It's similar like we give somebody a fish. हम उसको मछली देते हैं, खाओ. लेकिन अगर हम उसको सिखाएंगे how to catch fish, तो वो फिर आप पे डिपेंडेंट. दैट इज एक्चुअली, यू हैव टू टीच देम हाउ टू थिंक. यू हैव टू टीच योर सबऑर्डिनेट्स दिस इज अ स्पेस. वी विल क्रिटिकली थिंक, वी विल एंगेज इन कोलैबोरेशन, वी विल रेस्पेक्ट योर कम्युनिकेशन, एंड वी विल build a space of creativity, and it will lead to what, where we can give the space to our children, that this is how you can think. Then they can think about any situation. बच्चों के सामने आपको बच्चों को तैयार करना है फ्यूचर जनरेशन जॉब्स के लिए. सो उसके लिए ये 4 स्किल्स इंपॉर्टेंट है. तो अभी हम आगे भी जाएंगे कि देयर आर जनरली 2 अप्रोच टू एंगेजमेंट विद ह्यूमंस. तो ये एक दूसरी बात है. हम जनरली फोकस करते हैं कि व्हाट इज, एज अ लीडर, एज अ बॉस, व्हाट इज रॉन्ग विद यू. वी डोंट आस्क दिस क्वेश्चन, what has happened to you? So there is a hell lot of difference between asking these 2 questions. ये 2 approaches है. मान लीजिए I am late. As a participant, you are late. The organizer will scold you. What is wrong with you? Why are you late? Without asking this question, what has happened to you? Something may have happened. That's why generally हम बच्चा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है. एक क्वेश्चन था अभी जो बता रहे थे, कुछ इशू है. जनरली एक टीचर का या इवन फैमिली मेंबर का, पेरेंट्स का यही रहता है कि व्हाट इज रॉन्ग विद यू. जब हम रॉन्ग इज ए नेगेटिव टर्म, इजंट इट? ये पहले ही बच्चे को किस में डालता है? एक नेगेटिव पोजीशन में डालता है, नेगेटिविटी में डालता है, और वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है बच्चे के लिए, क्योंकि उसको लगता है एज एन अडल्ट, क्योंकि हम एज टीचर्स अडल्ट ही हैं, बच्चे का सोच डिफरेंट है. दैट्स वाई बच्चा इज समथिंग वेरी. So the point is, when we try to focus on what is wrong with you, it is something that is again a foundational error in our approach.
And when we focus on what has happened to you, it's an empowering statement. So it is something that we need to focus on. And with this, we conclude this session. And I hope you have